हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो शमाल स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये गरबा लुक। इसको आप दानिया लुक भी बोल सकते हो और वॉट एवर यू कॉल इट। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सा एंड बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ ये मेकअप करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस मेकअप को करने के लिए आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो है स्किन केयर। अगर आपका स्किन केयर अच्छा है ना, तभी आपको ये ग्लोइंग इफ़ेक्ट दिखेगा। इस ग्लोइंग इफ़ेक्ट को लाने के लिए आपको अपने स्किन में अच्छे से हाइड्रेशन करना होगा, प्राइमर करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो आपका लुक दिख रहा है ना, तभी आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ना कि मैं अभी कुछ टाइम से अपना अच्छे से टेक केयर कर रही हूँ, मतलब डाइट प्रॉपर ले रही हूँ। तो जिसकी वजह से मेरी जो स्किन है ना, वो नेचुरल ग्लो कर रही है। तो मैं ऐसा नहीं करती थी, मैं बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें खाती थी, बाहर की खाती थी। तो ये सब चीज़ें आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ना आप कितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लगा लोगे, बट यू विल नॉट फाइंड दैट ग्लो, ट्रस्ट मी। उसके बाद आपका स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने लगाया है अपना स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर। सो अगर आपको ये वाली पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि आपकी स्किन के लिए कौन सा प्राइमर रहेगा, ड्राई टू मीडियम, ड्राई टू नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग हैं जो लोग मेकअप करते हैं एंड वो सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाते हैं एंड वो प्राइमर को स्किप कर देते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप 2 in 1 वाली चीज़ यूज़ करो, जिसमें प्राइमर भी हो और उसमें मॉइस्चराइज़र भी हो। बट मैं आपको बोलूँगी आप स्किप मत करो प्राइमर, बिकॉज क्या होता है ना, हमारी स्किन पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर हम मेकअप करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, तो वो छोटे छोटे पोर्स में फिल हो जाता है। एंड आप देखते होंगे जब किसी का आप मेकअप बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हो ना, तो उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं जिसको हम मिनिमाइज़ नहीं कर पाते। सो विद द हेल्प ऑफ प्राइमर हम लोग ये कर सकते हैं। तो आप अच्छे से अपने नोज़ पॉइंट पे, जहाँ पे मैं अभी लगा के दिखा रही हूँ आपको, अपने अच्छे से जहाँ जहाँ आपके पोर्स हैं वहाँ पे अपना प्राइमर लगाएंगे एंड आप कुछ सेकंड्स का वेट करके देखेंगे, वो एरिया बहुत स्मूथ हो जाएगा, विच मीन्स आपके जो ओपन पोर्स है ना, वो एकदम क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपका जो फेस है ना, बहुत ही ग्लो करने वाला है। Every night I wait. Paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to lose. Let's throw all our worries away.
something far over, and I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I guess in the we're only friends. But I guess in the we're only friends. Never wanted to put all of this in your head, but I guess in the we're only friends. Every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get the truth. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now it's something far over, and I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I guess in the we're only friends. But I guess in the we're only friends. I just want you under the lights. I just want you when it's my time. I just want you. सो गाइस, ये था मेरा फाइनल लुक। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इफ़ यू वांट सच काइंड ऑफ वीडियोस। मैं जल्दी ही मिलती हूँ किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए डू लेट मी नो अगर आपको कोई स्पेसिफिक लुक देखना है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड ये जो मैंने लुक दिखाया है ना, आप ज़रूर बताएं आउट ऑफ 10 यह लुक आपको कैसा लगा। एंड अगेन मैं यही बोलूँगी, कोई भी मेकअप लुक हो उसके लिए आपकी स्किन जो है ना वो विद इन ग्लो करनी चाहिए, तभी आप अच्छे से महंगे प्रोडक्ट्स के साथ प्ले कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं तो आपका मेकअप अच्छा होगा। अगर स्किन केयर अच्छा नहीं है फ्रॉम विद इन तो आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा, चाहे आप कितने भी कॉस्टली प्रोडक्ट्स लगा लें। ये आप हमेशा ध्यान में रखना। मैं मिलती हूँ किसी अच्छे कंटेंट के साथ, ऐसी ही किसी खूबसूरत लुक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय।